This yeah, it is common in during summer days, no? Because many ant nest will available that time, huge number of. So yeah, only it is possible on this summer. Yeah, this time we went, but yeah, small amount we got, but come to summer then we'll have more. Summer days community people goes only collecting this one because they eat mango and meanwhile they hunting for this. Yeah, this is very interesting for those he knows. Yeah. People collect this ant egg and they sell it in market, no? Special Hatta Bazar, weekly market. They sell, some people will buy and use that. Usually people prepare curry and that jhul, soup, and egg soup. People prefer two dishes. One is curry, other one is ant juice, ant soup. Yeah, soup is very tasty with ragi, ragi flavor. They add it and really tasty. Yeah. So, which preparation are we doing? Are we doing soup or are we doing what? No, we are not doing soup. We are doing that recipe, curry and egg curry. So it's like a little gravy. Yes. This is ginger paste. We when I was maybe 5 years or 6 years, my father used to bring this type of ant egg, and he cooks, and from that day onwards I am taking this one and also preparing. Yes. So you have a lot of memory with this dish. Yeah. Lot of memories. Yes. So will you share one story about this dish? First, when you went for collecting this with your father, maybe. Yeah, when I was sixth standard, we went to mango group, and I followed my father. He used to carry this stick, bamboo stick, with that having the local the collecting things. With that he pushed into the nest, and he goes like this, and it came out from the nest into that collector. Yeah, then in this way we collect all the ant eggs. Yes. Yeah, then we brought, then my mother will prepare the dishes, and beside her I sat and looked the preparation, so from that I learned, and it is, maybe we'll see, it is very interesting and tasty. We'll check the taste now. Yeah. So what is this called? This dish is called in your language? Moirika kutsa. Mayurika means ant and kucha means egg. Yeah, that's the curry, no? And this Moirika kutsa. Okay. So is it common in your culture for men to cook? Yes, men can cook, women can cook. Yeah, we have no that
Yeah, we have actually gender equality. When man goes jungle, then the female also goes jungle. We add salt. Yes. Finally, we add this egg. Yes. Don't know again. Wait. Cool, cool. Just have a taste. Yeah, he tasted. You close your eyes and take. Close your eyes and take. No, with open eyes I can. Okay. Sense your taste. That's what. Pretty good. Yeah. Yeah. So, Pratik, from gathering to tasting, how was the experience for you? तो पहले तो यहाँ आने के बाद पता चला ना कि ये लोग चींटी का अंडा पकड़ के कुछ बना के खाते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि पहले तो कभी ऐसे खाया नहीं था। सिटीज में ये चीज़ें होती भी कहाँ है ना, चींटी मिलना मुश्किल है। मुश्किल है। तो चींटी के इतने सारे अंडे जिसका सब्जी बने वो कहाँ से मिलेगा। अच्छे बनाए, बड़ा बड़ा Eggs है ना, big eggs. बड़ा बड़े Good in summer, good. पर जैसे आए तब से तो बारिश ही चल रहा है। पापा बोल रहे थे ना कि इसके लिए धूप चाहिए होता है, चींटी को मतलब धूप में भगाने के लिए, तो हो नहीं पाया। 5 दिन तो ऐसे ही इंतजार करते रहे। अब ये ले लाके फिर जाएंगे। आखिर कल थोड़ा सा धूप निकला और हम निकल पड़े, तो 5-6 लोग निकले थे, जैसे किसी शेर का शिकार करना है, निकले हैं चींटी के अंडे पकड़ने। पर पहले तो मुझे लगा कि इजी है, क्योंकि जो चींटी का घर होता है ना मिट्टी का नीचे जमीन पे, उसमें से निकालोगे, उसको फोड़ोगे, चींटी भाग जाएगा, अंडा मिल जाएगा, इतना मेरे को लगा था। पर ऐसे नहीं था। आपने बोला कि पेड़ का चींटी है उसका ही अंडा लेते हैं, तो जो पत्तों का ऐसा घोंसला करके होता है उसको फोड़ना, और जो बंदा वो बैम्बू स्टिक से उस घोंसले को फोड़ रहा है ना, पूरा बारिश की तरह चींटियाँ शरीर पे आ रही है। तो मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हम जो सायंदा और मैं थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे, तो शूट करते करते हमारे बॉडी पे ऐसी चींटियाँ आती थी, तो फटाक से उनको झटकना ये वो। आप लोग तो उसमें घुस के वो पकड़ रहे थे, तो इट वाज रियली टफ जॉब एक्चुअली। और जितना मेहनत है
मतलब पूरा दिन मेहनत करने के बाद इतना खाना बनाए तो बहुत हार्डशिप है, बट वर्थ इट है अगर टेस्ट के हिसाब से। मेरे घर वाले मेरे को गालियाँ Kalau देने kalau वाले, asar kan. बोलेंगे चिकन मटन खाता था ठीक था, अभी चींटियों के अंडे खाने लगा। Kalau tolak asar. What is saying? Yeah, big eggs, no? It would be very tasty. Kenapa? And धूप there के is दिनों में इनका कहना था कि there is अंडे some- बड़े बड़े मिलते हैं, अभी तो बारिश चल रहा है तो मौसम है नहीं वैसे, बट फिर वो अंडे घोंसले को ऐसे फोड़ के ना नीचे एक चीज में अंडे कलेक्ट किए सारे, जैसे बारिश गिर रहा था अंडों का, फिर उसमें से चींटी अलग करना, बीच में उसका रस्सी टूट गया वो बैम्बू स्टिक का, तो वो बांधने में इतना दिक्कत क्योंकि सारा चींटी उसके ऊपर चढ़ा था। तो पापा तो डांस कर रहे थे एकदम, ठाए 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 चींटी काट रहा था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हमारे वजह से उनको इतना ये करना पड़ रहा, पर थैंक यू सो मच। Thank you. फिर वो मम्मी ने चींटी अलग करके अंडा अलग करके दिया, और आज इसको पकाया है। पकाने का तरीका तो आपने देखा है।